Very good morning to all. This side Ruby Ahuja, and today we are going to discuss about some gold market fluctuation and देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिले. तो डिस्कस करने से पहले एक बार क्लियर कर दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है. इफ यस काइंडली प्रेस 1 so that we can start our session from here. हम लोग देख सकते हैं गोल्ड के फ्लक्चुएशन 1803.4142 के लेवल्स पे फिलहाल मूव करते हुए. वन डे कैंडल की बात करें तो 1803.67 पे अपनी ओपनिंग दी. 4.46 का हाई बनाते हुए अभी तक का लो 1801.19 और करेंटली 1803.46 के प्राइजेस में मूव करते हुए यानी कि अपनी ओपनिंग के लगभग बराबरी के लेवल्स पे मूव करते हुए दिखने को मिल रहा है. हम लोग देख सकते हैं गोल्ड की फ्लक्चुएशन 1803.4142 हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट कैंडल को एनालाइज करने. तो 15 मिनट कैंडल लगातार अप होने के बाद अब थोड़ी सी करेक्शन दिखाते हुए 1803.44 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है और हम लोग जहाँ से पोजीशन कैरी करेंगे वो हमारी शॉर्ट की होगी. सो मार्केट वॉच और हम लोग अपनी एक पोजीशन को यहाँ से शॉर्ट बनाएंगे. 1803.50 1803.38 के लेवल्स पे और हम लोग जो पोजीशन बनाए हुए हैं यहाँ पे एक शॉर्टिंग की पोजीशन बनाए हुए हैं. मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हुए 1803.49 के लेवल्स पे और करेंटली प्राइसेस 1803.51 के लेवल्स पे मूव करते हुए दिख रहे हैं. पूरी उम्मीद की एक बार करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने एक बार अपसाइड सिनेरियोस दिखा के वापस से करेक्शन दिखाई है, हम लोग अभी इस टाइम पे उम्मीद करें थोड़ी सी करेक्शन वापस से देखने को मिलेगी. यहाँ पे 1803.51 के लेवल्स पे प्राइसेस थोड़ी सी करेक्शन के साथ. पूरी उम्मीद करें करेक्ट होते हुए 1802 1801 तक के लेवल्स देखने को मिले को हम लोग क्लियर करते हुए दिखेंगे. कल के दिन की बात कर ले तो एक बार हम लोग कल के डे की कैंडल देखेंगे तो कल हम लोग के मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था. कल की मार्केट अपना लो बनाती हुई दिखी थी 1780s के लेवल पे और अपना हाई जो बना 1806 तक के लेवल्स पे यानी कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिले 1780 से 1806 1808 तक. और फिलहाल उसके बाद से जब मार्केट ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई और वापस से अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ
रात के बाद से मूवमेंट हुआ और 1808 से 1801 तक के लेवल्स देखने को मिले और अभी थोड़ी सी रिकवरी के साथ 1803 के लेवल्स पे मूव करते हुए। अगर हो सकता है मार्केट का मोमेंट एक बार अपसाइड जाते हुए 1834-35 के लेवल्स वापस से रिट्रेस करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन आज शाम में और कल शाम में जैसे कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज है, अगर वो नेगेटिव आता है तो वापस से एक बार 1700 के लेवल्स को टच किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग आ जाते हैं एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे। तो हम लोग जो देख रहे हैं आज हमारे पास वेडनेसडे मार्केट, तो शाम को 6 बजे का डेटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसके साथ ही इम्पोर्ट प्राइसेस मंथ टू मंथ, एंड साथ ही बात करें 6:45 का डेटा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ टू मंथ एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट। साथ ही हम लोग को 8 बजे देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट डेटा है वो है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेजरमेंट जो है लेवल ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेड मैन्युफैक्चरर्स इन न्यूयॉर्क स्टेट। सो यूजुअल इम्पैक्ट अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आता है यानी कि 18.1 से ऊपर आता है तो हम लोग को देखने को मिलेगा हमारी करेंसी केस कर सकता है। देख सकते हैं प्रीवियस रिजल्ट 18.3, एक्सपेक्टेशन 18.1 की है। अगर 18.1 से ऊपर रेट्स आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि करेंसी के लिए स्ट्रांग होते हुए दिखेगा और साथ ही हमारा गोल्ड एक बार डाउन आते हुए दिखेगा। बट अगर 18.1 से डाउन रिजल्ट आते हैं तो गोल्ड एक बार ऊपर दिखेगा। एक तो हम लोग को ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, साथ ही हम लोग को इम्पोर्ट जिसमें कि मेजरमेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड एंड सर्विसेज परचेज डोमेस्टिकली एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आता है तो हमारी करेंसी के लिए स्ट्रांग होगा। यूजुअली ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, एक मीडियम टर्म और वी कैन से लो टर्म डेटा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाते हुए नहीं मिले। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का देखने को मिलेगा। इम्पोर्ट प्राइसेस मंथ टू मंथ की बात कर ले तो ये चेंजेस इन द सर्विसेज परचेज डोमेस्टिकली यूजुअल इम्पैक्ट जो देखने को मिलेंगे एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आया तो हमारी करेंसी के लिए स्ट्रांग और वापस से लिए गोल्ड के लिए डाउन, और अगर एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग आता है तो हमारे करेंसी के लिए वीक और गोल्ड के लिए हमें स्ट्रांग होते हुए दिखेगा। इसके बाद 6 बजे की ये डेटा खत्म होने के बाद 6:45 फिर से डेटा देखने को मिलेंगे जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ टू मंथ, और ये हमारा मीडियम टर्म डेटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट डाल सकता है। Measurement is the change in the total inflation adjusted value of output produced by manufacturers, mines and utilities. देख सकते हैं प्रीवियस रिजल्ट 0.9%, एक्सपेक्टेशन 0.5% की है। यूजुअल इम्पैक्ट अगर 0.5% से ऊपर आते हैं तो एज आई हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स करेंसी जितनी स्ट्रांग होगी हमारा गोल्ड उतना ही करेक्ट होते हुए दिखेगा। साथ ही 6:45 एक और डेटा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देन फोरकास्ट करेंसी के लिए स्ट्रांग होते हुए दिखेगा। 8 बजे एक और अच्छा डेटा है जिसमें कि देख रहे हैं क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, एंड इसमें अपोजिट है एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट हमारा करेंसी के लिए अच्छा होते हुए दिखेगा। प्रीवियस 1.5 मिलियन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। 8 बजे हमारा ये सेशन भी रहेगा, उसमें हम लोग उस डेटा को एनालाइज करके ही ट्रेड लेते हुए दिखेंगे। आ जाते एक बार वापस से MT4 टर्मिनल पे तो 15 मिनट कैंडल 2.9694 के लेवल्स पे और हमारी पोजीशन प्रॉफिट्स में आती हुई दिख रही है। देख सकते हैं प्राइसेस थोड़ी सी करेक्शन के साथ 1802.9092 के लेवल्स पे मूव करते हुए थोड़ी सी करेक्शन,
और हम लोग की पोजीशन ऑल दो प्रॉफिट्स में, लेकिन हम लोग वेट करेंगे अच्छे प्रॉफिट जनरेट होने का। 1802.24 8483 के लेवल्स 2 मिनट का वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि 2 मिनट बाद दूसरे 15 मिनट कैंडल फॉर्मेशन का टाइम, और देखेंगे उस कैंडल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। 1802.7980 के लेवल्स। एक मिनट का वेट करेंगे, 1 मिनट बाद हमारी दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम। पूरी उम्मीद है वो भी एक डाउन साइड डायरेक्शन में आती हुई दिखे, ताकि हम लोग की पोजीशन अच्छे खासे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई दिखे। एटीन जीरो टू पॉइंट 8081 के लेवल्स। देख सकते हैं थोड़ी सी करेक्शन के साथ फॉर्मेशन इस कैंडल का 1802.5149 के लेवल्स पे। हम लोग की पोजीशन ऑल दो अच्छे प्रॉफिट्स में, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। और हम लोग अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। सो हम लोगों ने अपनी एक पोजीशन अच्छे खासे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर लिया, और अभी प्राइजेस 1802.32 के लेवल्स पे मूव करते हुए। एटीन जीरो टू पॉइंट 2124 के लेवल्स। 1802.3133 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी पोजीशन कैरी करना नहीं चाह रहे, बिकॉज प्राइजेस का अभी तक का लो 80 बना हुआ है। और हम लोग चाह रहे हैं अगर वापस से एक करेक्शन आती है तब हम लोग वापस से ट्राई करेंगे एक पोजीशन कैरी करने को, अदरवाइज इस पोजीशन पे हम लोग कोई भी पोजीशन कैरी करना नहीं चाह रहे। 1802.2322 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए 1 मिनट के मूवमेंट को देखेंगे तो 1 मिनट कैंडल लगातार डाउन आती है 1801.95 के लेवल से, वापस से थोड़े से अपसाइड मूव दिखाते हुए 1802.27। वॉल्यूम को ट्रेस हम लोग उम्मीद करें जब अच्छे वॉल्यूम ट्रेड करते हुए दिखता है तब हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, जैसे कि कल शाम का फ्लक्चुएशन। करेंटली प्राइसेस 1802.3432 के लेवल्स पे मूव करते हुए आज की जो रेंज देखने को मिली 1801.34 का अपना लो बनाते हुए 1804.63 तक का हाई बनाया हुआ है, और अभी फिलहाल प्राइजेस अपने ओपनिंग से 1.44 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 0.08% की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है कि कैंडल प्रीवियस क्लोजिंग 1803.69, ईयर वाइज चेंजेस की बात करें तो 92.65 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, दैट इज 4.90 के साथ। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 1973.60,
एंड 52 वीक्स लो की बात करें तो 1676.73। वॉल्यूम जब भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है 86 लैक्स 74,000 के आसपास वॉल्यूम ट्रेड देख सकते हैं वापस बाय साइड। तो हम लोगों ने अपनी एक और पोजीशन कैरी की हुई है 1802 के लेवल्स पे बाय की। फिलहाल प्राइसेस थोड़ी सी करेक्शन के साथ 1801.9598 के लेवल्स पे मूव करते हुए हम लोगों ने अपनी पोजीशन 1802.60 के लेवल्स पे बाय की हुई है। थोड़ी सी करेक्शन 1801.97। वेट करेंगे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन का, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पोजीशन कैरी की हुई है यहाँ से और हम लोग की पूरी उम्मीद है कि एक बार वापस से अपटिक दिखाती हुई मार्केट देखने को मिलेगी 1802.13 थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ। 1 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन देखें तो लगातार वापस से थोड़ी सी करेक्शन 1802.0306 के लेवल्स पे। प्राइसेस एक स्मॉल रेंज में मूव करते हुए 1802 से 1804 की रेंज में ही मूव करते हुए दिख रहे हैं सुबह से ही, और अभी भी उस लेवल को मेंटेन किए हुए हैं। हमारे ख्याल से अभी कोई पोजीशन कैरी करना अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी करें, अदरवाइज रहने दें, क्योंकि शाम में जो हम लोग को डेटा देखने को मिलने वाला है वो इतने अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करा देगा कि हम लोग दिन भर न भी ट्रेड ले तो भी कोई इशू नहीं जाएगा हम लोग को। ओके, सो एक बार वापस से रिकवरी 1802.35। मूविंग टुवर्ड्स goldnetdenia.com, तो हम लोग देखेंगे ग्लोबल मार्केट का हाल आज का। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबल मार्केट। ओके, सो आज मोस्टली मार्केट हम लोग को मिक्स होती हुई दिख रही है, नो टू मच पॉजिटिव और नो टू मच नेगेटिव रिजल्ट्स। सो यस 30 पॉजिटिव होते हुए बिटकॉइन नेगेटिव, शांघाई एसी नेगेटिव, यूके 100 नेगेटिव, डेक्स 30 पॉजिटिव, निकाई 225 पॉजिटिव, निफ्टी 50 विद 17,440.65 0.35% की तेजी के साथ, एंड एसएक्स 200 पॉजिटिव, एफआरए 40 नेगेटिव, आईएससी नेशनल 100 नेगेटिव, स्विस एमआई 20 पॉजिटिव, इसके साथ यूके ऑयल पॉजिटिव, डब्ल्यूटीआई क्रूड पॉजिटिव, यूएस डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव 92.66 पे 0.04% की तेजी के साथ, जिसकी वजह से गोल्ड स्पॉट हमारा डाउन होते हुए 1802.4 के लेवल्स पे। सिल्वर स्पॉट नेगेटिव, प्लेटिनम भी नेगेटिव और इसके साथ ही पैलेडियम भी नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। आ जाते हैं गोल्ड न्यूज एफएक्स स्ट्रीट पे। सो गोल्ड बुल्स स्टेप बैक फ्रॉम 200 days moving average as US Treasury yield rebound. So gold fits the strongest run up in a week above 1800, down 0.15% intraday around 1801 during Wednesday's Asian session. Gold snaps 2-day uptrend to consolidate the biggest daily jump in a week. US Treasury yields recovered after declining the most since mid August. ओके, वापस से देख सकते हैं एक रिबाउंड लेते हुए 1802.96 के लेवल्स पे। गोल्ड broke the 1795 area and jumped above 1800. It's hovering around the nearest area at 1809 with the positive momentum intact. A break above 1810 should lead to the more gains in short term. The critical resistance about continue to be monthly high around 1833. If yellow metal breaks that mentioned area, the next target is seen at 1850. A retreat below 1795 is in XEU USD would put the price back into the previous range between 1780 and 1800, and the downside risk would increase. There is an immediate support around 1790, and then comes the lower bound of the range 1780. That is the critical support. If that support area around 1780 gives up, it could spark volatility and a quick slide to the next support at 1770. सपोर्ट्स की बात कर लो तो 1798, 1780, 1769.50, 1760, 1747। whereas रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 1809.60। इफ इट्स ब्रेक दिस
हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 1820 एंड अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है सो नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1833.50। फंडामेंटल ओवरव्यूज की बात करेंगे उसके पहले एक बार वापस से मूव करेंगे MT4 टर्मिनल की ओर, तो देख सकते हैं प्राइजेस वापस से रिकवर करते हुए 1802.87 के लेवल्स पे फिलहाल मूवमेंट के साथ। एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल बनाते हुए और वापस से एक रेड कैंडल कन्वर्जन 1 मिनट कैंडल पे आते हैं, तो लगातार रिकवरी के बाद वापस से एक थोड़े से करेक्शन के साथ हम लोग ने अपनी पोजीशन को बाय साइड कैरी किया हुआ और वो पोजीशन प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। ऑल्दो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम टू जनरेट गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। 5 मिनट कैंडल की बात करें तो एक गिरावट के बाद वापस से थोड़े से अपसाइड मूवमेंट दिखाते हुए 1802.79 के लेवल्स दिखाते हुए मिल रही है। हमारी पोजीशन अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई लगातार दूसरी कैंडल 5 मिनट की अपसाइड फॉर्म होती हुई 1803 तक के लेवल्स को टच करती हुई देखने को मिल रही है। एटीन 1802.9, 1803। वापस से थोड़ी सी करेक्शन 1802.89 के लेवल्स। पूरी उम्मीद करें अपसाइड मूवमेंट की, जो कि हमारी पोजीशन को अच्छे खासे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करती हुई दिखे। 1804 हमारा टारगेट होगा और वहां से हम लोग अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए दिखेंगे। 4 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है और पूरी उम्मीद करें नेक्स्ट कैंडल विल आल्सो बी अप। सो आ जाते एक बार MT4 टर्मिनल से अपने फंडामेंटल ओवरव्यू से पे, तो गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग ऑन ट्यूसडे आफ्टर रिबाउंडिंग फ्रॉम मंथली लोज boosting by a slide in US yields. The ons is up by 0.70% and reached at $1808.65, the highest level in a week. From the top, it's pulled back modestly, holding so far above 1800. Silver is also recovering, gaining 0.45%. At the same time, the DXY falls 0.10%, but it's off lows. The key event on Tuesday was the US inflation report. The consumer price index rose August 0.3% below the 0.4% expected. Also, the core inflation rose below market consensus. The number activated a sell-off in bonds ahead of next week's FOMC meeting. The 10-year Treasury yield dropped from 1.35% to 1.26%, hitting the lowest intraday level since August 24. More US data will be released during the week, including retail sales that will continue to affect market expectation about what the Fed might announce. तो हम लोग देख रहे हैं कल हम लोग को जो डेटा देखने को मिले उसमें जो एक्सपेक्टेशन थी 0.4% की और जो हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है 0.3%, दैट इज एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग देखने को मिला। उसकी वजह से हमारा करेंसी वीक होती हुई और हमारा गोल्ड वापस से रिबाउंड करते हुए सो अभी हम लोग 1 वीक के डेटा देख ले तो बुलिश मोमेंटम के साथ 1813.75 फॉर 1 वीक, for 1 month 1823.12, bearish is also bullish, and for 1 quarter it's 1851.67. So gold weekly forecast, XEO USD snaps 4 week winning streak, eyes on US CPI data. Okay, so gold struggled to recover its losses after breaking below key technical levels. Risk of flows helped USD gather strength throughout this week. Investors await US CPI data ahead of Fed policy decision on September 2020. Gold started the new week. Okay, we are moving towards the forex factory data and will notice कि 2020 sorry 22
22 सितंबर को क्या ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से पूरी मार्केट वेट कर रही है 22 सितंबर का। ओके, सो इट्स 22 सितंबर और हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, ओके दैट्स द रीजन। 11:30 बजे एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन और इसके साथ ही एफओएमसी स्टेटमेंट देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से पता चलेगा टेपरिंग के बेसिस पे क्या रिजल्ट्स देखने को मिले और क्या डिसीजन लिए गए। इसकी वजह से पूरी मार्केट अभी 2022 की मार्केट पे डिपेंड कर रही है। हाँ, क्योंकि देख सकते हैं 20th को हम लोग को NAHP हाउसिंग मार्केट इंडेक्स देखने को मिल रहा है। 21 को हम लोग को जो देखने को मिलेगा वो बिल्डिंग परमिट्स, करंट अकाउंट्स, होल्डिंग हाउसिंग स्टार्ट्स, ओके नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट 22 को हम लोग को काफ़ी अच्छी मीटिंग्स देखने को मिली है, एफओएमसी स्टेटमेंट, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, फेडरल फंड्स रेट्स। एंड थर्सडे को एक बार देख लें तो थर्सडे हमारा ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश सर्विसेज PMI, CB लेंडिंग इंडेक्स मंथ टू मंथ एंड नेचुरल गैस स्टोरेज। मूव करेंगे इस डेटा में, बट उसके पहले एक बार अपने MT4 टर्मिनल पे आ जाते हैं क्योंकि एक दूसरी 15 मिनट कैंडल फॉर्मेशन का टाइम। देख सकते हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साथ मार्केट सुबह से ही रेंज बाउंड होती हुई दिख रही है 1801 से 1804 के लेवल्स के बीच में, और अभी भी उस स्टेबिलिटी को मेंटेन की हुई है रेंज बाउंड होती हुई 1802.84 के लेवल्स पे। हम लोगों ने अपनी पोजीशन कैरी की हुई है 1802.60 के लेवल्स पे, फिलहाल प्रॉफिट्स में, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट होने का और तभी हम लोग अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे मार्केट से। थोड़ी देर मार्केट का मूवमेंट देखेंगे, अगर हम लोग को अच्छी पोजीशन मिलती है तो हम लोग क्लियर करते हुए दिखेंगे। एटीन 02.8184 के लेवल्स, देख सकते हैं प्राइसेस पूरे स्टेबल करते हुए 1802.8 के लेवल्स पे। एटीन 02.96, देख सकते हैं पूरी तरीके से शॉर्ट डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ प्राइसेस। थोड़े से अपसाइड मूवमेंट 1803 का लेवल ब्रेक होते हुए दिखेगा तो 1805 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay, not taking further into it, we are moving towards our discussion session. So gold started the new week in a calm manner
and consolidated the previous week's gain on Monday, with the trading volumes returning to the normal levels following the Labor Day holiday in US. The XAU-USD pair turned south and lost 1.6% on Tuesday as the risk-averse market environment helped the greenback in file demand. Although the pair was able to erase a small portion of its losses on Thursday, it closed the week below 1800 and lost nearly 2%. So what happened last week? So the data from the China revealed that on Tuesday that exports rose by 25.6% on a yearly basis in August compared to the market expectation of 17.1%. Additionally, Eurostat reported that gross domestic product in the euro area expanded by 2.2% on a quarterly basis in the second quarter. Betting analysts estimate for a contraction of 0.6% despite these upbeat data releases. However, the market mood soared and major global equity indexes posted losses. In turn, the US dollar index rose 0.35%, forced XEU-USD to edge lower. On Wednesday, the US Bureau of Labor Statistics announced that JOLT job openings reached a new series high of 10.9 million in July. On a negative note, the IBD tip economic optimism index fell to its lowest level at 2021 at 48.5 in September from 53.6 in August. These figures failed to impact the market sentiment and the USD preserved its strength against its major rivals. Following its September policy meeting, the European Central Bank noted its statement that favorable financing conditions could be maintained with a moderately lower pace of pandemic energy purchase program purchases. The initial market reaction to the seemingly hawkish forward guidance helped the Euro USD pair push higher and the modest selling pressure surrounding the greenback paved the way of a rebound in the XAU USD. Nevertheless, ECB President Christine Lagarde clarified that this decision was an adjustment rather than tapering and kept EUR-USD, that is Euro-USD's upside. Okay, so meanwhile, the US Department of Labor's weekly publication showed that the initial jobless claim fell to its lowest level since beginning of the pandemic at 310,000. Okay, so here we can see that the initial jobless claims have been down and it has reached at the level of 310,000. Ahead of the weekend, investors largely ignored the data from the UST that revealed the producer price index, that is PPI, for the final demand rose to 8.3% on a yearly basis in August from 7.8% in July. After starting the last day of the week in positive territory, Wall Street's main in Texas turned south and the XY staked a rebound, causing XAO USD, that is COMEX Gold, to close near lower limit of its weekly range. Okay, and what would be happening next week, that is this week, we will discuss it too, but first of all we are moving towards the MT4 terminal. तो ओके वापस से मार्केट रिबाउंड करती हुई थोड़े से अपटिक देती हुई 1802.95 के लेवल्स पे. Already we have cleared our position at $136 profit, and again we have taken the another position and we are in $70 profits. Whether we have to wait for some time to generate good profits? देख सकते हैं थोड़े से अपटिक 1803.05.
1803.11 के लेवल्स और 1803.21. Okay, so we are in good profits already. But still we are waiting for some movement in the market. थोड़ी देर मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद अपने न्यूज सेक्शन पे आएंगे. Okay, so we have generated a good profit from this trade and I am clearing this position. तो हम लोगों ने वापस एक पोजीशन क्लियर कर ली है जिसमें कि $190 की प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखे. हम लोगों ने अपनी आज की दो ट्रेड्स क्लियर की हैं जिसमें कि पहली पोजीशन $136 के प्रॉफिट के साथ एंड नेक्स्ट पोजीशन जो थी $190 के प्रॉफिट के साथ क्लियर की हुई है. अब हम लोग वापस से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, बट थोड़ी देर मार्केट का मूवमेंट ओवरऑल देखेंगे. वापस से थोड़ी सी करेक्शन स्टेबिलिटी के साथ प्राइसेस. देख सकते हैं वापस से थोड़ी सी करेक्शन और हम लोगों ने सही टाइम पे अपनी पोजीशन को क्लियर कर लिया. मूविंग बैक टू discussion session. So what could be happen next week, that is this week we are talking about. So the first high impact data released on of the week will be Tuesday's consumer price index report from the US. Cleveland Federal Reserve Bank Loretta Mester said on Friday that she sees upside risk to the inflation forecast and voiced her support for tapering to start before the end of the year. On a similar note, Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic noted that it would be appropriate to taper sometime this year. A stronger than expected CPI reading could cause investors to start pricing in a reduction in the Fed's asset purchases and provide a boost to the USD and vice versa. On Wednesday, Chinese industrial production and retail sales figure will be looked upon for the fresh impetus. However, the muted market reaction to the latest trade data from China suggested that impact of these readings on market sentiment is likely to remain limited. Retail sales and Philadelphia Fed manufacturing survey will be featured in the US economic docket on Thursday ahead of the University of Michigan's preliminary consumer sentiment index data on Friday. Technical overview की बात करें, so following the decline witnessed in the first half of the week, gold's near-term technical outlook seems to have turned neutral with a bearish bias. In addition to the fact that XAU-USD closed below the 100-day and 200-day simple moving averages. For the fourth straight day on the Friday. Yep, and the relative strength index indicator on the daily chart relating below 50. On the downside, the initial support is located at 1790, where the Fibonacci 38.2% retracement of the latest uptrend is located. A daily close below that could open the door for the additional losses towards 1780 and 1760, that is the static level. The initial resistance could be seen in the 1800 to 1805 area, the psychological level, 50-day simple moving average, Fibonacci 23.6% ahead of 1810 and 1815. एक मिनट बाद दूसरी कैंडल की ओपनिंग का टाइम है और देखते हैं दूसरी कैंडल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है.
ओके, सो एक नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन होने का टाइम, उसके पहले ही हमारी लास्ट कैंडल एक बार करेक्शन की ओर आती हुई दिख रही है। एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन और लगातार वापस से डाउन कैंडल बनती हुई। देख सकते हैं वापस से एक अपसाइड मूवमेंट लेती है 1803 तक के लेवल्स पे। प्राइसेस पूरी तरह से स्टेबल करते हुए दिख रहे हैं इन्हीं करंट लेवल्स पे। वापस से जो करेक्शन देखने को मिल रही है मार्केट में, फिर से वही स्टेबिलिटी, या तो एक बार अपने डाउन साइड लेवल को 1801 के लेवल को ब्रेक करते हुए वापस से 17 की रेंज में आती हुई दिख सकती है मार्केट। सो हम लोग वापस से चलते हैं अपने न्यूज सेक्शन की ओर, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट गोल्ड न्यूज reuters.com, which is our preferred site as well as हमारी favorite site जो है। So precious gold steadies near 1800 as US inflation data fuels certainty. Platinum hits on over 9-month low of 926.26 OJET. Towards the end of this year, gold seen at 1700 analyst. Gold held above the key psychological level of 1800 on Wednesday after a tamer than expected rise in US inflation led to uncertainty on when the US central bank would begin tapering its asset purchases. Spot gold was steady at $1,802.92 per ounce as of 0318 GMT after hitting a 1 week peak of 1808.50 on Tuesday. US gold futures eased 0.42% to $1,804.30. Just a moment, we will discuss another thing in a minute. Okay, so with the CPI data coming to a bit lower than expected, for some data to push a possible announcement a little bit further down the road, and that should be fairly supportive for gold prices. Consumer price index was up just 0.1% last month compared with an expected increase of 0.3%. That was the smallest gain in 6 months, suggesting that inflation had probably peaked, though it could remain high for a week while amid persistent supply constraint. The data has thrown a shade of uncertainty over the Federal Reserve taper timeline as it's due to hold a 2-day monetary policy meeting next week.
A growing number of policymakers have suggested the Fed could start scaling back asset purchases this year. Toward the end of this year, we see gold prices down at 1700. Once we get the taper announcement, all attention turns to when the Fed is going to start hiking rates. तो हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से टेपरिंग की अनाउंसमेंट होने वाली है और हमारी पूरी उम्मीद है कि एंड ऑफ द ईयर इस बार गोल्ड के प्राइसेस दिसंबर में अप जाने की बजाय डाउन जाते हुए दिखेंगे एंड वी कुड सी द लेवल ऑफ 1700 अगेन इन द मार्केट. Higher interest rate rise the opportunity cost of holding gold, which pays no interest. The CPI data weighed on the dollar index while the benchmark US 10-year yield hit its lowest level regarding August 24 on Tuesday. Elsewhere, silver fell 0.3% to $23.76 per ounce. Platinum hit an over 9-month low of 926.26 and was last seen down 0.4% and $935.52. Palladium dipped 0.3% to $1971.791. Prices touched their lowest level since July 2020 at $1935 in the previous session. सो एक बार आ जाते हैं वापस से अपने MT4 टर्मिनल पे. तो प्राइसेस पूरी तरह से सस्टेन करते हुए 1802.9782 के लेवल्स पे देख सकते हैं. पूरी तरह से रेंज बाउंड मार्केट है. इसमें ट्रेड करना अब थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसीलिए हम लोग अपनी कोई और ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं इस लेवल से. एक बार वापस से आ जाएंगे और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड न्यूज़ kitco.com. So here we are with Gold News Kitco. Okay, so we will see this news for some time because it's important as market radar. How will Fed tapering Fed coin impact gold? Kitco News special coverage of the Denver Gold Forum is brought to you by So I New hope voice is Pacific clear to you Metals. all, E.B. Tucker, Director of right? और हम लोग देखेंगे कि इसमें फेड टेपरिंग के लिए क्या अनाउंसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Metallo Royalty and author of Why Gold, Why Now. Welcome to the Denver Gold Forum. Thanks for having me. Pleasure to see you in See you person. again, yeah. Finally, we get to meet in person. I know. You and I have been speaking about your book ever since it came out last summer. You've sold 35,000 copies. Congratulations. Thank you. Okay, I've got to visit the title again. Why Gold, Why Now? You wrote this last summer, so presumably people should have bought in last summer. Of course, it went up for a while and it didn't do so well this year. Yep. Should you still go into gold now? Is this question still applicable today? Well, as you know from reading the book, the subtitle is The War Against Your Wealth and How to Win It. And wealth has been under attack, since we came out in the book. I mean, 18 months or so, there's never been a time as a Western person in a free market where your wealth has been more in danger. And the people that read the book realize at the end, I tell what I've done with my money, which has worked out quite well. So everybody looks at the price of gold. What's the price of gold going to do? And all this. This is a tough year, as you mentioned. Hit a high of 2083 last August. Now it's about 1800. And we do think the gold price will go a bit higher, but that's not. Okay, so what he is trying to say कि this year was very difficult for gold market because prices has reached at the level of 2083 at the last year, but this year it sees the level of 1800, basically 3 to 400 points down this year. So this year is very difficult for gold. Further we will discuss Really how you create wealth. It's you can have it as wealth insurance. We explain that in the book, but the secret sauce in there is the royalties, and that's what I've done with my time and my money, and it's worked out quite well. Let's talk about royalties and financing in just a bit, but okay, let's back up for a second here. Let's talk about portfolio allocation, because after all, that's what
this book is really all about: protecting your wealth, how to allocate your assets. You even have a chapter in there called "How Much Gold is Enough Gold," and you said minimum 3%. Well, I don't say really a minimum, but what happens is that people always say, how much gold do I need to own? Is it 20%? Is it 10%? It's a lot less than you think. Gold is not really an asset that you buy to go up in value tremendously to make money. Everybody thinks. Okay, so again, he is telling a very good thing, which is like we shouldn't have to scalp many of times, because people were asking how much gold can give you the profits. It's 10% or 20% or 30%. So he said that it's about 3% only, because scalping is not every time good. We do scalping, and whenever the prices go up, we are starting to short, and whenever prices are going down, we are going to buy. That's not the good process in trading gold. That's why he is speaking, and he is telling ki 3% is more than enough to generate from the gold market. So don't do too much scalping, guys, because it would be too much dangerous for yourself or for your trading also. So moving towards this video. I'm going to buy these gold coins. They're going to go crazy in value. The government's going to try to seize them. I'm going to make all. It's not really like that. It's insurance. Gold does well when other things get really hurt. And so we work with a number of 3%. We kind of play with this number, and we say, look, if you had 10 million bucks and you had 300 grand worth of gold, that would probably be a starting point for saying it's enough. And I think a lot of people are shocked by that. I mean, they think, wait a minute, not so much more. No, I mean, your investments, your royalty company investments, mining businesses, all these things, these are things that you would see appreciation and sell, whereas the gold you could just hold on to. For someone who is not yet invested in precious metals, he might ask you, EB, what's the difference between gold and a high interest savings account? Well, there's a huge difference. I mean, everybody used to say gold doesn't pay a dividend, but the high interest savings account doesn't pay a dividend either. In fact, so you arguably are going backwards. I mean, in the book, we talk about negative interest rates, which are here now. We can talk about that more. If you look at the real rate of interest, it's negative. That means the Okay, so there is something which they are talking about, the interest rate and as well as the gold. So what is the correlation between interest rates and gold? As we have discussed many of the times, whenever the interest rates are high, gold will fall down, and whenever the interest rates are down, gold will rock. Why it is so? Because if the interest rates are too much high, investors are looking forward for bonds and debentures and stocks, we can say, and the stocks which pays too much dividend basically. So that is the position when, that is the reason why gold is down whenever the interest rates are high, and whenever it is down and gold is vice versa high. interest rate you're being paid minus inflation. And everybody out there, the real people in this world, know inflation is really high right now. I mean, all you got to do is go to the grocery store. Things are sold out. There's inventory shortages. I buy prime beef to cook for myself and my kids. It's over $30 a pound US right now for prime tenderloin beef. It was $20 a year ago. It's up across the board. Now, granted, that's the nicest beef you can get, but I mean, everything is up. Remember the paper towel shortages that we had? All these different things. I have stock in Campbell's soup. They run this report on what does it cost for a basic can of tomato soup over the decades. And the price of all these things is going up, 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 up. So would it come down? That's the question. Well, maybe, but of course, always it's possible. But what's going to make it come down? You have labor shortage. Stop buying the beef, EB. Make the price come down. Become a vegan. Become a vegan. The price comes down. But I hate to tell you, but the grain, grain is the same way. All your grains, your vegetables, supply chains are constrained. The port is backed up in Los Angeles consistently for 15, 18 months. You're having to pay people a minimum wage that's much higher than people thought in the past. They're still complaining about the wage. I know where I live, there's shortages everywhere. You go to a restaurant, the service is slow, the tables are all packed. I think this is something that people are really underestimating. And so here's the point. The point is not conspiratorial. The point is your high interest savings account pays you 0.5% interest per year. If you take out an inflation rate of 2 or 3 or 4, you pick your own number. You're going backwards. So with the ounce of gold, you don't get the interest payment, which by the way is taxable and taxes are going up, but you do get protection against that. Okay, so he's talking about why gold is moving up and up and up year and year wise. Why it is so? So basically, he's telling about ki if you work in any bonds or debenture which give you
interest rate of 0.5%, that is 0.5%, but the inflation rate would be 2 to 3%. So you are in the basically losses because inflation has been rising, but your interest rate or your earnings are not rises at that level, particular level. So if you are working with gold, you can generate more than 2 to 3%, and that's why moreover the persons or moreover the people are trading in gold instead of the interest rates gaining stocks or bonds or debentures, etc. And inflation. I think some people who argue for the transitory narrative, transitory inflation narrative, which is what the Fed has been saying, will look at data like the velocity of money, for example, the M2 velocity of money, still at all-time lows, still hasn't gone back up yet despite a recovery in the GDP. And they're saying, well, look, velocity is low. So again, the question is, so why gold is down by 300 points or 400 points? So the reason behind it, whenever the economy is down, that is the year of 2020, the economy was down and it has touched the ground itself. तो उस टाइम पे वी हैव नोटिस्ड कि गोल्ड एक बार बहुत ज़्यादा तेजी दिखाते हुए मिला था, एंड to rescue our economy from these ground level or reached at the level of the we can say the heaven, we have to invest more in the stocks and our bonds and treasury yields so that our economy will be continue in a good level. That's why the all the financial investors and as well as हमारे जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सबने गोल्ड से अपनी होल्डिंग्स निकाल के वापस से अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. दैट्स वॉट द रीज़न कि हमारा गोल्ड एक बार वापस से थोड़ा सा करेक्ट होते हुए दिखा है, बट इंस्टेड नो डाउट gold will be up and up for the year and year basis, and it will also break the record of 2083 also. No one's spending money like they used to, so this is going to be transitory. What do you say? Well, What do you think? I say, maybe I'll have my leg amputated temporarily, so it'll just be, a temporary thing. It'll pass. I'll grow another one. So it's this is not something that fades through. I mean, it's not fading through in supply chains. Every single company that you listen to the earnings call, regular companies, they're telling you having problems getting materials. There's not enough rubber. There's not enough copper. There's not enough employees. There's not enough trucks. We can't get it on any trains. I mean, I was looking the other day at some of the biggest investments for Gates and his wife and all these people are railroads. And railroads are a tremendous corridor for getting things here and there. And a lot of these billionaires are investing in railroads because you have this ability to have so much demand that business is absolutely fantastic. The railroads are buying each other. Okay, so we are holding it here and moving towards the MT4 terminal. So prices has reached at the level of 1804, and again it's correcting at the level of 1802.52. It's showing that market is in a range which is at 1801 to 1804, not crossing the lower level as well as not crossing the higher level of the ground. वापस से 1802.42 तक के लेवल्स, थोड़ी सी करेक्शन. दो मिनट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी बाकी की चीजें. एटीन 82.81 के लेवल्स.
So moving towards the discussion session, और देखेंगे यहाँ पे हम लोग अपने डिस्कशन पॉइंट्स को. जस्ट होल्ड ऑन, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ नई चीज़ें. ओके, so we will moreover discuss about the XAU-USD rebounds over 1790 after US inflation data. So points to be covered today: gold teases pairs of late, gold drops towards the lower limit, the US consumer price index, US inflation expectations, gold fits bounce off, gold traders are bracing for any entry, gold 4-hour chart and gold prices and chart. So discuss करते हैं. Gold teases bears of late. Gold teases bears of late consolidates the previous day's gains inside a familiar range. Fed tapering chatters underpin US dollar ahead of inflation data. Bear crossed the 4-hour inflation fears keep gold sellers hopeful. Gold dropped toward the lower limit of its horizontal trading range channel at 1782 in the early American session on Tuesday, but managed to stay a rebound with the greenback facing renewed bearish pressure on inflation data. तो हम लोग देख रहे हैं कल हम लोग को अमेरिकन सेशन में एक बार 1780 तक के लेवल्स देखने को मिले, बट वापस से हम लोग को एक रिबाउंड आते हुए दिखा एज बेयरिश प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन डेटा, जिसकी वजह से गोल्ड एक बार वापस से अपसाइड मूव करते हुए दिखा. The US Bureau of Labor Statistics announced on Tuesday that the core consumer price index declined to 4% on a yearly basis in August from 4.3% on July. डिस्कस करेंगे गोल्ड के बाकी के डेटा, उसके पहले हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और वी विल डिस्कस लेटर ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. Okay, so hold on guys, we are back with the gold edged lower. So print came in lower than the market expectation of 4.2%, caused the US dollar index to drop to a fresh daily below of 92.40. That is, हम लोगों ने देखा जिस तरीके से कि कल हम लोग को रिजल्ट्स जो देखने को मिले थे, एक्सपेक्टेशन 4.2% की थी और रिजल्ट्स हम लोग को डाउन देखने को मिले, तो इसकी वजह से यूएस डॉलर अपने डेली लो पे आते हुए दिखा 92.40 पे. एज ऑफ राइटिंग दी एक्सयू यूएसडी पेयर वाज पोस्टिंग स्मॉल डेली गेन्स एट 1794. बट अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड ने 1808 तक के हाई बनाते हुए देखे. सॉरी, gold edged lower during the early part of the European session and dropped to fresh daily lows around the 1788 region in the last hour.
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 1788 एज अ टाइम ऑफ राइटिंग देखने को मिला, बट हम लोग को 1780s तक के लो देखने को मिले. The US Treasury bond yield turned out expectation for an imminent Fed taper announcement and a modest uptick in the US Treasury bond yield turned out to be a key factor that exerted some pressure on the non-yielding yellow metal. However, worries about the fast spreading Delta variant of the coronavirus and a global economic slowdown might lend some support to the traditional safe haven XAU-USD. Apart from this, some follow through US dollar pullback from 2 week tops touched in the previous day could act as a tailwind for the dollar denominated commodity, including gold, and help limit losses. The USD bulls preferred to move on the sidelines and wait for a fresh clues about the likely timing of the Fed's tapering plan. Hence, the market focus will remain glued to the latest US consumer inflation figures on August, due for release later during the early North American session. The data will play a key role in influencing the USD price dynamics and provide some meaningful impetus to gold ahead of the FOMC policy meeting September 2021. Okay, so in the meantime, the XAU-USD seems more likely to prolong its consolidative price action and remain confined a familiar trading range held over the past 1 week or so. So gold picks up bids to 1793, down 0.05% intraday, as the sluggish Asian session on Tuesday teases bears ahead of the European traders' arrival. The precious metal initially shares risk on mode before the cautious sentiment ahead of the US consumer price index data weighs on the gold prices inside a familiar trading range between 1782 and 1804 is stabilized since nearly a week. यूएस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके पहले एक बार MT4 टर्मिनल पे आएंगे. ओके, प्राइसेस हैज फॉलन एट 1801.18 पूरी तरीके से करेक्शन के साथ. एटीन 1.27 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए पूरी तरीके से करेक्शन दिखाते हुए. एक बार 1 मिनट कैंडल का मूव देखेंगे तो 1 मिनट कैंडल स्लाइड अप 1801.45. 3 मिनट बाद इस 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग का टाइम, और पूरी उम्मीद करें थोड़े से अपसाइड मूव दिखाती हुई मिलेगी इन 3 मिनट्स में. देख सकते हैं वापस से थोड़ी सी करेक्शन 1801.5758 के लेवल्स. पूरी उम्मीद करें एक बार अपसाइड रिबाउंड करती हुई 1802.15 तक के लेवल्स देखने को मिले. फाइव मिनट कैंडल का मूव देखेंगे तो 5 मिनट कैंडल लगातार डाउन 1801.0703 के लेवल्स पे मूव करते हुए. फिफ्टीन मिनट कैंडल का मूव देखे तो 1800.98 के लेवल्स बनाते हुए थोड़ी सी करेक्शन के साथ. 1 मिनट बाद दूसरी कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे, उस कैंडल का मूव किस डायरेक्शन में होता है.
1 मिनट का वेट करेंगे क्योंकि 1 मिनट बाद हमारी दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम। देख सकते हैं एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 12 बजे का टाइम 1801.32 के लेवल्स पे थोड़ी सी अपसाइड स्पाइक के साथ पूरी उम्मीद करें 1802 1803 तक के टारगेट्स दिखाते हुए मिले अभी ये कैंडल। वन मिनट कैंडल का मूव देखें तो वापस से थोड़े से रेड सिग्नल के साथ 1801.2019 के लेवल्स पे मूव करते हुए आ जाते हैं हम लोग अपने डिसीजन पॉइंट पे। So market sentiment soars at the 8-year high US inflation expectation signal reflection fears amid concerns. Today's US CPI for August become the key for Fed policymakers when they meet the next week. At the latest Philadelphia Federal Reserve President Patrick Harker pushed for the sooner tapering but refrained from confirming the next move. It's worth noting that Goldman Sachs' lack of belief in US President Joe Biden's six-pronged strategy to battle the virus joins the geopolitical fears over the relating to Hurricane Nicholas to also weigh on the sentiment. Additionally, the US-China rift over renaming the Taipei Red Office and Europe surge to defend against the Taiwan also underpin the US dollar safe haven demand and weigh on gold prices. Amid these plays, the US dollar index remained unchanged, recovering intraday losses by the press time, whereas the US 10-year Treasury yield rise 0.7 basis point to 1.33%. So further, the Wall Street benchmark closed mixed, but the S&P 500 future print mild gain, but at the latest. Moving on, virus woes and geopolitics can entertain gold traders. However, major attention will be given to the US inflation figures as they help forecast the next market moves. Gold fades bounce off monthly support line at the short term simple moving averages cast doubts on the metal's strength. That said, sluggish MACD signals and the momentum line also challenges the buyers. Hence, the metal's further weakness toward retesting the ascending support line from August 19 near 1784 becomes imminent. However, the recent lows surrounding 1782 adds to the downside filters before confirming the bearish move towards August 9 swing high near 1752. Alternatively, recovery move need a sustained run up beyond the 50 and 100 simple moving average converges near 1804 to confirm the upside momentum targeting the monthly higher near 1834. Overall, gold traders are bracing for an entry but seek assurance before the key US inflation data.
सो आ जाते हैं MT4 टर्मिनल पे वापस से। तो प्राइजेस एक बार वापस से 1801.31 2015 के लेवल्स पे मूव करते हुए पूरी तरह से करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। एटीन 1800.9697 के लेवल्स पे पूरी तरह से करेक्शन के साथ प्राइजेस वापस से देखने को मिल रहे हैं। अभी जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, पूरी उम्मीद है 1 बजे के लगभग वापस से एक बार मार्केट रिबाउंड करती हुई दिखेगी। एटीन 1800.8884 के लेवल्स। वापस से करेक्शन 1800.73। पूरी तरह से मार्केट अब रिबाउंड होती है एक बार वापस से करेक्शन के साथ 1800 तक के लेवल्स को टच करती हुई। हमारी साइड से आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने अपनी 2 ट्रेड्स भी क्लियर की हुई हैं और बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस कर ली हैं। अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग लाइव चैट में मेंशन कर सकते हो। लाइव सेशन आपके लिए ओपन है। यू आर हैविंग 4 मिनट्स विद योरसेल्फ। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और एल्स टाइप 100 टू एंड में दिस सेशन। एटीन 01.13 के लेवल्स पर अभी भी मूवमेंट। मार्केट एक बार वापस से अपसाइड ही रिबाउंड करेगी क्योंकि एशिया यूरोपियन सेशन ओपनिंग का टाइम है और पूरी उम्मीद है कि वापस से मार्केट एक बार अपसाइड रिबाउंड करती हुई दिखेगी। बट अभी हम लोग कोई भी पोजीशन कैरी करना नहीं चाह रहे इस टाइम पे। 2 मिनट्स विद योरसेल्फ। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग लाइव चैट में मेंशन कर सकते हैं रिलेटिंग टू एनी टूल्स, एनी टेक्निक्स, एनी एनालिसिस और anything whatever you want to ask which is connecting to our session. You can just mention or else you can type 100 in the chat box. ओके, सो हम लोग आज का सेशन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बाकी की चीज़ें शाम के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज शाम को हमारी न्यूज़ भी है काफ़ी सारी, उनको भी एनालाइज करेंगे और आज शाम को 8 बजे वाली न्यूज़ जो है उसका इम्पैक्ट हम लोग पूरी तरह से मार्केट में यूज़ करेंगे अपने लाइव ट्रेडिंग के दौरान। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कंसर्न and I am ending this session right here. Keep patience while trading and
trade good in your own time or in your free time, whatever you want. So thanks for learning and thanks for hearing me.